Hello students, welcome to the second video of mathematical induction. So before starting, first we start Brahmanad. Om Om Shanti Shanti Shanti. So stop. Today we will discuss problems by method of induction contains inequality form. The result which expression contains inequality form. Last class we discussed the problems using method of induction like divisibility or series type. Okay. Now one question, prove that by method of induction, prove that by method of induction number 1, 2 to the power n is greater than n for all n belongs to capital N. So how can you prove 2 to the power n is greater than n for all n belongs to capital N? Okay. So in method of induction, first we take a given statement. Let P of n 2 to the power n is greater than n be a given statement. Given statement for n equal to 1, 2 to the power n equal to 2 to the power 1, so 2 to the power 1 equal to 2 and which is greater than 1. कहीं एडी एन जार 1 पकेले एलएचएस टा कोन अब 2 हला ए पार्ट टा कोन होची 1 होची सो 2 इज ग्रेटर देन 1 व्हिच इज ट्रू ओके सो p of 1 is true. P of 1 is true. Next, assume that P of n is true for n equal to k, that is 2 to the power k is greater than k, let it be equation 1. Claim P of k plus 1 is true. Okay, that is to prove 2 to the power k plus 1 n jar k plus 1 substitute करो तो 2 to the k plus 1 is greater than k plus 1. 2 to the power k plus 1 is greater than k plus 1. Okay, so how can you prove this one? We have 2 to the power k is greater than k. No, 2 to the power k is greater than k. In order to get 2 to the power k plus 1, what we do? Now multiplying 2 on both sides. That implied 2 into 2 to the power k, 2 into 2 to the power k is greater than 2k. Okay. So 2 into 2 to the power k, that implied means 2 to the power k plus 1. So 2 to the power k plus 1 is greater than 2k. Okay, but 2k means k plus k. 2k means k plus k. अच्छा, k is always greater than 1. Since 2 to the power n is greater than n, here we prove for n equal to 1, 2 to the power 1 equal to 2, which is greater than 1.
द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अच्छा आम प्रथमे 1 प्रूव कले एटा 2 भी प्रूव हम सो तापर आम कौन के एज्यूम कले द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k तार अर्थ के भैल्यूटा ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 1 हम सो k ग्रेटर देन 1 मीन्स बट k इक्वल टू k देख के भैल्यूटा सब 1 टू ग्रेटर हम ना नहीं के ग्रेटर देन 1 ना बट के इज इक्वल टू के आपको जब आम एड करा कौन हो के प्लस के एटा कौन हो के प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन तो के प्लस के इज ऑलवेज ग्रेटर देन के प्लस 1 दैट इम्प्लाइड के प्लस के इज ग्रेटर देन के प्लस 1 दैट इम्प्लाइड 2 to the power k plus 1 is greater than k plus 1 hence proved. So by method of induction p of k plus 1 p of n is true for all n belongs to k. So you write the conclusion part p of 1 is true, p of k plus 1 is true whenever p of k is true, hence by method of induction it is true for all n belongs to capital N. Okay. Next number 2, 1 plus x to the power n is greater than or equal to 1 plus nx for all n belongs to capital N. So we prove this statement is true for every natural number but x must be greater than minus 1. Okay. So here we also use by method of induction and you know how to prove by method of induction. In first step let it be p of n be the given statement, prove. Let p of n 1 plus x to the power n greater than or equal to 1 plus nx be a given statement. Given statement. Okay. For n equal to 1, n equal to 1, 1 plus x to the power n equal to 1 plus x to the power 1. So 1 plus x to the power 1 equal to 1 plus x. Okay. If we put n equal to 1 in the right side term, 1 plus n into x equal to 1 plus 1 into x, which equal to 1 plus x. 1 plus x equal to 1 plus x. That implied 1 plus x, 1 plus x to the power 1 is equal to 1 plus x. नहीं कि 1 plus x to the power 1 एटा कौन हो 1 plus x है 1 plus x to the power 1 equal to 1 plus x. That means 1 plus x to the power n एटा कौन हो ग्रेटर है और इक्वल टू है ना. So 1 plus x to the power n is greater than or equal to 1 plus nx for n equal to 1. 1 पकड़े satisfy होची. Therefore p of 1 is true. Is true, or you can write this is the greater than or equal to. Greater than or equal to. Okay. So p of 1 is true. Next. Assume that p of n is true for n is k, for n equal to k, that is 1 plus x to the power k greater than or equal to 1 plus kx. Let it be equation 1. Equation 1. Claim p of n is true for n equal to k plus 1, that is 1 plus x to the power k plus 1, 1 plus x to the power k plus 1 greater than or equal to 1 plus k plus 1 into x. एटा हम प्रूव करिया पड़ो.
1 plus k plus 1 into x कहीं एन जगह k plus 1 पकड़े ना 1 plus x bar k plus 1 is greater than or equal to 1 plus k plus 1 into x. Now we prove this one. अच्छा ए इनइक्वालिटी प्रूव करिया गले आमर जो गिवन कंडीशन टा अच्छी एटा सब यूज करियो एटा यूज करियो जोड़ा कि जो पार्ट में एज्यूम करछे से पार्ट यूज करियो. वी हैव 1 plus x to the power k greater than or equal to 1 plus k x, but we prove 1 plus x to the power k plus 1. So in order to get 1 plus x to the power k plus 1, now we multiply 1 plus x on both sides. That implied 1 plus x to the power k plus 1 into 1 plus x greater than or equal to 1 plus kx into 1 plus x. That implied 1 plus x to the power k plus 1 is greater than or equal to 1 plus k plus x into 1 plus x. This is 1 plus okay, or 1 plus x to the power k plus 1 is greater than or equal to एटा मल्टीप्लाई कले कौन आसियो 1 plus x 1 plus x plus kx plus kx square नहीं which is equal to 1 plus k plus 1 into x plus kx square. 1 plus x plus k plus 1 into x plus kx square equal to 1 plus k plus 1 into x plus kx square है ना. देखो 1 plus x to the power k plus 1 कौन अच्छी greater than or equal to 1 plus x plus kx square अच्छी ना, किंतु एटा क्या संगे समान होबो ए जो एक्सप्रेशन दा दिस वन 1 plus k plus 1 into x plus kx square है नहीं कि. डू यू अंडरस्टैंड. देखो एटा जगह रे हमें कौन लिखले ए एक्सप्रेशन दा इक्वल टू 1 plus k plus 1 into x plus kx square. ए जो एक्सप्रेशन आसीबो ए एक्सप्रेशन दा 1 plus k plus 1 x2 कौन हम ग्रेटर हम माने ए पूरा एक्सप्रेशन दा एठारु कौन हम ग्रेटर हम which is greater than or equal to 1 plus which is greater than or equal to 1 plus k plus 1 into x k plus 1 into x नहीं which is greater than or equal to 1 plus k plus 1 into x कहीं ये कौन अच्छी ये जो एक्सप्रेशन रहा ये के एक्स स्क्वायर अच्छी ना. देखो के एक्स स्क्वायर संगे ऐड कले जदि आम ए टोटल एक्सप्रेशन दा ए दीरा एक्सप्रेशन कौन हम ग्रेटर हम ना. सो व्हिच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 plus k plus 1 into x. दैट इम्प्लाइड 1 plus x to the power k plus 1 must be greater than or equal to 1 plus k plus 1 into x. ओके कहीं जो एक्सट्रा आम 0 पकेबा 0 पकेले ये कौन हो 1 plus k plus 1 into एटा 0 हो इक्वल हम से केस रे. अदरवाइज इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 plus k plus 1 into x. तेणु ए जो एक्सप्रेशन दा 1 plus k plus 1 x ठारू निश्चित रूपे ग्रेटर हम और मे बी इक्वल हो. ओके that's why it's 1 plus x to the k plus 1 is greater than or equal to 1 plus k plus 1 into x, and which is true. So p of k plus 1 is true. K plus 1 is true. So by method of induction it is true for all n belongs to capital N. Okay.
1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus 1 by n plus 3 plus dot dot 1 by 2n is greater than 13 by 24 for n greater than 1. Okay. So, how can you prove? By method of induction. First you have to take p of n with a given statement, and for n equal to 1 prove it for n equal to 1. Okay. Proof. Let p of n 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus 1 by n plus 3 plus dot dot 1 by 2n greater than 13 by 24 with a given statement. With a given statement. For n equal to 1, LHS part. Okay. For n equal to 1, since n greater than 1, here n greater than 1 means you take n equal to 2, not taking 1. n equal to 2 means the LHS part sum of 2 term, these term sum of 1 by 1 এটা কোন হবো n যা 2 পকুছ 2 plus 1 plus 1 by 2 plus 2, because here we prove for n greater than 1 must be greater 1 means n equal to 2 নেবে আমি. For n equal to 2, then the LHS part is sum of 2 term, the n the 2 no মানে দুইটা term sum হবো, n the 3 no মানে তিনটা term sum নেব. Okay. 1 by 2 plus 1 3 plus 4. So 1 by 3 plus 1 by 4. Take it LCM 4 plus 3 7 by 12. So 7 by 12 means your denominator part is 24. So 14 by 24 है. But 14 by 24 which is greater than 13 by 24. Okay. Do you understand? So P of 1 is true. So P of 1 is true. Next, assume that P of k is true. It assume koriya, that is 1 by k plus 1 n jar k poko 1 by k plus 1 plus 1 by k plus 2 1 by k plus 3 plus dot dot 1 by 2k is greater than 13 by 24. Okay, 13 by 24. We prove that P of k plus 1 is true. That is n jar k plus 1 पकेबा 1 by k plus 1 plus 1 केता ला k plus 2 हला एडी k plus 1 plus 1 k plus 3 and 1 by k plus 1 plus 3 k plus 4 है plus dot dot last one is 2 into k plus 1 means 2k plus 2 2k plus 2 is greater than 13 by 24. एटा को हमको प्रूव करिया पड़ियो जे 1 by k plus 2 plus 1 by k plus 3 plus 1 by k plus 4 plus dot dot 1 by 2k plus 2 is greater than 13 by 24. एटा को प्रूव करिया पड़ियो हमको ना कि अच्छा. So actually we have the expression, we assume that P of k is true, तार तो ए expression आप पाके रखी नहीं कि एटा मैं यूज करिया. अच्छा, we have, now we write these things. We have 1 by k plus 2, sorry 1 by k plus 1 plus 1 by k plus 2 plus 1 by k plus 3 plus dot dot 1 by 2k is greater than 13 by 24.
ए एक्सप्रेशन आप पाखे अच्छी बट एक्चुअली वी प्रूव दिस वन 1/k + 2 स्टार्ट करिया पड़ो नहीं कि अच्छा सो एडी आमको कौन करिया पड़ो देख 1/k + 1 दैट इम्प्लाइड ये कौन अच्छी 1 + k + 2 स्टार्ट अच्छी सो ए टर्म आम कौन करिया लेफ्ट साइड नहीं जाए सॉरी राइट साइड ना 1/k + 2 + 1/k + 3 plus dot dot 1/2k is greater than 13/24 minus 1/k + 1 है ना। अच्छा ये कौ पर्यटन दिल 2k + 2 जाए अच्छी ना तो 2k + 2 रो बिफोर टर्म कौन आसो 2k + 1 आसो तार बिफोर टर्मटा 2k आसो तार तो ये आम कौन करा पड़ो ये जो अच्छी आमर 1 + 2k अच्छी तो 2 यार बिफोर टर्मटा कौन 2k + 1 तापर 2k सो 1 + 2k + 1 आ 1 + 2k + 2 ए दुईटा टर्म कौन करा पड़ो एपटे एड करदे राइट साइड एड करदे दैट इम्प्लाइड 1/k + 2 + 1/k + 3 प्लस डॉट डॉट 1/2k एमती अच्छी ना आम कौन करिया ये प्लस 1/2k + 1 प्लस 1/2k + 2 ए टर्म ए दुईटा टर्म कौन करी मु बोथ साइड एड करी लेफ्ट रे एड करी राइट साइड भी एड करी व्हिच इज ग्रेटर देन 13/24 माइनस 1/k + 1 ना कि प्लस 1/2k + 1 प्लस 1/2k + 2 एमती अच्छी आर यू अंडरस्टैंड देख पे एक्चुअली आमर ए पार्टा अच्छी ये जो पार्टा अच्छी ये आम कौन करिया ए 1/k + 1 मुझे राइट साइड नहीं जी कौन भाई आमको प्रमाण करा पड़ो ये 1/k + 2 आने पड़ो तो सो ए टर्मटा एपट रखी लाभ किसी ना तेणु आम 1/k + 1 को राइट साइड नेली राइट साइड नेलापर ये आसला ये आउ थे कौन कले आम 1/2k + 1 1/2k + 2 एपटे एड करवा राइट साइड भी एड करवा ओके। अच्छा देख सो दिस एक्सप्रेशन ये जो भैल्यूटा आसला ये भैल्यूटा कौन हम ना दिस वन इक्वल टू देखो ए एक्सप्रेशन आडू गेटर हम मुझे कौन लिखुच ये लिखा यार भैल्यूटा क्या संगे सामान हम 13/24 प्लस 1/2k + 1 प्लस 1/2k + 2 माइनस 1/k + 1 try to understand okay try to understand 13/24 minus 1/k + 1 plus 1/2k + 1 ना से कौन हम 2k + 2 हम ना कि हाँ 2k + 1 plus 2k + 2 ये जो भैल्यूटा आसला आम कौन कले 13/24 लिखाला फास्ट ए टर्म लिखिली 1/2k + 1 तापर ए टर्म लिखाला माइनस 1/k + 1 ए भैल्यू जहाँ हम ये भैल्यू जहाँ आसो अच्छा व्हिच इज इक्वल टू 13/24 प्लस ये आम कौन लिखिपर 2k + 1 प्लस 1/2 कमन ने k + 1 माइनस 1/k + 1 ओके। अच्छा 13/24 प्लस यू आम एलसीएम ना ए पार्ट एलसीएम ना कौन हो ना 2k + 1 इंटू 2 × k + 1 अच्छा यहाँ 13/24 अच्छी मुझे ए एक्सप्रेशन को एड करदेवी या एड कले कौन हो यार एलसीएम के आसो 2 × 2k + 1 × k + 1 आसला अच्छा 2k + 1 गला और रहा कौन 2 × k + 1 कौन हम 2k + 2 हम प्लस 2k + 1 गला और रहा के 2k + 1 हम माइनस k + 1 गला और रहा कौन 2 × 2k + 1 कौन हम 4k + 2 हम 4k + 2 हम ओके डू यू अंडरस्टैंड देख यहाँ जेमसिन रखिली यहाँ मुझे एड कली आर एलसीएम निहाला
एलसीएम नेला पर ताकू ऐड कराला मल्टीप्लाई करी कराला अच्छा प्लस टू के केते होची 4k ये -4k कैंसिल होला +2 -2 सॉरी ये आसीबो केते आसी जे 2 + 1 2 + 1 केते 3 3 - 2 अच्छा अच्छा एटा केते आसीबो कहलो हाँ k + 1 गला पर 2 × k + 1 केते 4k + 2 हो ना 4k + 2 अगर माइनस अच्छी माइनस टा मल्टीप्लाई कले कौन होची ये आसीबो तो +2 - 2 भी कैंसिल होला आ कौन रहबो सो 13/24 + 1 है नहीं ये k + 1 अच्छी +2 के कैंसिल 1 अच्छी ना तो 1/2 × 2k + 1 × k + 1 अच्छा ये अच्छी अच्छा 13/24 + 1/2 × 2k + 1 × k + 1 व्हाट एवर मे बी दी वैल्यू ऑफ k देखो k रो वैल्यू तो निश्चित रूप 1 रू ग्रेटर हम ना नहीं हेल्ले यार वैल्यूटा जदि k रो 1 रू ग्रेटर हम तुम जहाँ नौ निह यार वैल्यूटा कौन हम 0 पॉइंट समथिंग आसे ना कहीं ऊपर 1 अच्छी तले 2 × समथिंग अच्छी तो डिनोमिनेटर पार्टा बड़ हम तो 1/डिनोमिनेटर पार्टा बड़ है यहाँ कौन 0 पॉइंट समथिंग आसो तो 0 पॉइंट समथिंग है 13 + 24 + 0 पॉइंट समथिंग है यहाँ कौन हम दिस वन इज ग्रेटर देन 13/24 यार वैल्यूटा जहाँ भी 0 पॉइंट समथिंग आसो ना एतिकी प्लस एटा एड कले जो वैल्यूटा आसो सो से वैल्यूटा निश्चित रूपे 13/24 टू ग्रेटर हम ना अच्छा सो 1/k + 1 that implied 1/k + 2 plus 1/k + 3 plus ... okay 1/k + 2 plus 1/k + 3 plus 1/2k plus 1/2k plus 1 plus 1/2k plus 2 must be greater than 13/24 that implied 1/k + 2 plus 1/k + 3 plus ... 1/2k plus 1/2k plus 1 plus 1/2k plus 2 is greater than 13/24 hence proved. So p of k plus 1 is true hence by method of induction it is true for all n belongs to capital N. Okay, so in this way you have to prove this given expression. So this expression contains inequation equality inequality. So a inequality भी हमें prove कर ले. Okay, now next we do another problem that is next 1 × 1 factorial plus 2 × 2 factor plus 3 × 3 factorial plus ... n × n factorial equal to n plus 1 factorial minus 1. Okay, you know factorial means continuous product of first n natural number is known as n factorial. देखो n factorial means it is the continuous product of first n natural number. n factorial माने n टा गणन संख्यार गुणफल को हम कहते n factorial continuous product 1 × 2 × 3 × 4 × ... n. So before last n minus 1 is there, before last n minus 2 is there, like that. Okay, for example 10 factorial. So 10 factorial means 1 × 2 × 3 × 4 × ... last one is 10, before last 9, before last 8 × 7, like that. So 1 to 10 the multiplication जति आसे सेति हबो. ए 5 factorial माने 1 × 2 × 3 × 4 × 5. Okay, so 1 × 2, 2 × 3, 6, 6 × 4, 24, 24 × 5, 120, 120. अच्छा 1 × 4 × 1 × 2 × 3 × 4 means 4 factorial. तो 4 factorial × 5 equal to 5 factorial. So 5 factorial means 5 × 4 factorial. Like that 10 factorial means 1 to 9 × 10.
like that 10 factorial means 1 to 9 kon hobo 9 factorial into 10, that is 10 factorial means 10 into 9 the factorial. Okay, or you can write 10 into 9 dekho eta ame likhiba 10 into 9, 9 factorial means 10 into 9 factorial means 9 into 8 factorial, then the 5 factorial 5 into 4 factorial hochi 10 factorial kon hobo 10 into 9 factorial, 9 factorial ame likhiba 9 into 8 factorial. Okay, like that. So in general n factorial means n into n minus 1 factorial or n plus 1 factorial. N plus 1 factorial means n plus 1 into n factorial. एमती आम लिखिपर ना ना वी कैन एक्सप्रेस इन दिस वे n plus 1 factorial equal to n plus 1 into n factorial, like that n plus 2. So n plus 2 factorial means n plus 2 into n plus 1 into n factorial. 10 factorial equal to 10 into 9 into 8 factorial. Okay, so this is the factorial. But actually here we prove 1 into 1 factorial plus 2 into factorial plus 3 into 3 factorial plus dot dot n into n factorial equal to n plus 1 factorial minus 1. But 1 factorial means 1, 0 factorial equal to 1, not 0. 0 factorial means 1 obviously. Kaiki factorial is only defined for only natural number, not fractional, not negative power. Negative number factorial undefined. No, fractional 1 by 2 factorial not defined. But 0 factorial equal to 1. 0 factorial 1 number. So factorial all these factorial आमर जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे चैप्टर से पढ़ा एक्चुअली फैक्टोरियल कौन ना ना ए प्रॉब्लम पे आमको ये दरकार दिस आर नेसेसरी टू नो फॉर यूजिंग दिस प्रॉब्लम. So to prove by method of induction, first we take P of n with a given statement. Answer. Let P of n 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial plus dot dot n into n factorial equal to n plus 1 factorial minus 1 be a given statement. Be a given statement. For n equal to 1, n 1 means gote term sum of LHS part 1 into 1 factorial. So 1 into 1 factorial means 1, this is 1, RHS एटी कौन हम n 1 पके n plus 1 factorial minus 1, तो 1 plus 1 factorial minus 1, 1 plus 1 factorial means 2 factorial, तो 2 factorial minus 1, 2 factorial means 1 into 2 minus 1, तो 2 minus 1 equal to 1. Okay, so LHS equal to RHS, P of 1 is true. Assume that P of k is true, that is 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial plus dot dot k into k factorial equal to k plus 1 factorial minus 1. We assume that P of k is true, the statement is true for n equal to k, that is 1 into 1 factorial plus 2 into factorial plus 3 into 3 factorial plus dot dot k into k factorial equal to k plus 1 factorial minus 1. n जार आम 1 पकाचे, k जार कौन पक n जार k पकाचे है. अच्छा, claim P of n is true for n equal to k plus 1, for n equal to k plus 1. That is to prove that
1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial plus dot dot k plus 1 into k plus 1 factorial n jar k plus 1 पको जाए ना नहीं लास्ट वन इज k plus 1 into k plus 1 factorial equal to n jar k plus 1 पकले कौन हो k plus 1 plus 1 तो k plus 2 रो factorial minus 1 एटा प्रूव करिया पड़ियो सो LHS pattern नेबा नाउ वी टेक द LHS पार्ट LHS पार्ट हमें कंसीडर करवा नहीं कि अच्छा सो देखो LHS पार्ट लिखला परे एटा प्रीवियस टर्म लिखे लास्ट टर्म रो प्रीवियस टर्म लिखा हो 1 into 1 factorial now sorry LHS 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial plus dot dot k plus 1 into k plus 1 factorial तो यार हमें लास्ट टर्म लिखा दैट इज 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial plus dot dot तो यार प्रीवियस टर्म ना कौन हो एटा k plus 1 into k plus 1 factorial प्रीवियस टर्म ना कौन लाइक दैट देखो 3 into 3 factorial लो प्रीवियस टर्म कौन होची 2 into 2 factorial होची गोटे टर्म कम हो तो k plus 1 गोटे 1 कम होले कौन k हो into k factorial plus k plus 1 into k plus 1 factorial यार प्रीवियस टर्म ना हम लिख ले बट वी हैव 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial plus dot dot k into k factorial equal to k plus 1 factorial minus 1 ऐसे नहीं कि k plus 1 factorial minus 1 हम एडो तीरो समडा plus k plus 1 into k plus 1 factorial ओके अच्छा देखो ये हमें कौन कराबो here what we do now k plus 1 factorial minus 1 ये k plus 1 factorial ए दिरा टर्म आम k plus 1 factorial कॉमन नेबा तो k plus 1 factorial कॉमन नेले 1 रहिला एडी कोन रहिला प्लस k plus 1 ओके माइनस 1 देखो ए फर्स्ट टर्म आम लास्ट टर्म रो k plus 1 factorial कॉमन नेली तो कॉमन नेला परे असला k plus 1 factorial कॉमन नेला परे 1 plus k plus 1 टोटल टू माइनस 1 अछि सो k plus 1 factorial एटा कोन अछि k plus 1 plus 1 k plus 2 minus 1 okay so k plus 1 factorial into k plus 2 its value like that you know 10 factorial means 9 10 into 9 factorial तो 10 factorial means 10 into 9 factorial okay और 10 into 9 factorial equal to what 10 factorial अच्छा k plus 1 factorial into k plus 2 that is k plus 2 factorial like that 9 factorial into 10 factorial k plus 1 k plus 2 into k plus 1 factorial minus 1 k plus 2 into k plus 1 factorial equal to k plus 2 factorial minus 1 and this is RHS okay RHS so p of k plus 1 is true last conclusion लिखियो p of 1 is true p of k plus 1 is true whenever p of k is true hence by method of induction p of n is true for all n belongs to capital N okay next x to the power n minus y to the power n is divisible by x minus y for all n belongs to capital N okay
Now we prove it also by method of induction. First we take P of n answer. Let P of n x to the power n minus y to the power n is divisible by x minus y. Okay. For n equal to 1, x to the power n minus y to the power n equal to x to the power 1 minus y to the power 1 x minus y, which is divisible by x minus y, which is divisible by x minus y. So P of 1 is q. P of 1 is q. Assume that P of n is true for n equal to k. For n equal to k, that is x to the power k minus y to the power k is divisible by x minus y. X to the power k minus y to the power k is divisible by x minus y. So this one is divisible by x minus y, means x to the power k minus y to the power k is a multiple of x minus y. That implies x to the power k minus y to the power k equal to m into x minus y. Okay, because this one is divisible by x minus y. That means it is a multiple of x minus y. So multiple means you can write x to the power k minus y to the power k equal to m into x minus y, where m is a integer, where m belongs to z plus, okay, positive integer. That implied x to the power k equal to m into x minus y plus y to the power k plus y to the power k. Let it be equation 1. Okay. Claim P of k plus 1 is 2. P of k plus 1 is 2. That is to prove that x to the power k plus 1 minus y to the power k plus 1 is divisible by x minus y. So this one is divisible by x minus y, means we have to prove x to the power k plus 1 minus y to the power k plus 1 is a multiple of x minus y. Okay. Now x to the power k plus 1 minus y to the power k plus 1 equal to x to the power k into x minus y to the power k into y to the power k into y. But x to the power k equal to m into x minus y. X to the power k means m into x minus y plus m into x minus y plus y to the power k plus y to the power k into x minus y to the power k into y minus y to the power k into y. So x to the power k plus 1 minus y to the power k plus 1 equal to x to the power k into x minus y to the power k into y. But x to the power k equal to m into x minus y plus y to the power k. Now substitute the value of x to the power k here into x minus y to the power k into y. So multiply this one, mx into x minus y plus x into y to the power k minus y to the power k into y. Okay. Now mx into x minus y plus y to the power k that is x minus y into y to the power k.
So again take it common x minus y. So x minus y into mx plus y to the power k. Okay. So mx into y to the power k whole multiplied into x minus y. That means x to the power k plus 1 minus y to the power k plus 1 is a multiple of x minus y. That is divisible by x minus y. So x to the power k plus 1 minus y to the power k plus 1 is divisible by x minus y. That is p of k plus 1 is true. Hence by method of induction it is true for all n belongs to capital N. Okay. Next we do another problem. A plus AR square plus dot dot a into r to the n minus 1 equal to a into r to the n minus 1 by r minus 1, where r not equal to 1. We prove by method of induction. First we take let p of n equal to a plus AR square plus dot dot a into r to the n minus 1 equal to a into r to the n minus 1 by r minus 1 be a given statement for n equal to 1. For n equal to 1 the LHS part and the 1 means gote term sum hobo. So a hela RHS part ta kon hobo dekho RHS another 1 pakale kon hochi. So a into r to the power 1 minus 1 by r minus 1 a into r minus 1 by r minus 1 cancel. So a has so LHS equal to RHS. So P of 1 is true. P of 1 is true. Next assume that P of n is true for n equal to k, that is a plus AR square plus dot dot a into r to the power k minus 1 equal to a into r to the power k minus 1 by r minus 1. Claim P of n is true for n equal to k plus 1, that is a plus AR square plus dot 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 a into r to the power k plus 1 minus 1 equal to a into r to the power k plus 1 minus 1 minus r minus 1 एटा प्रूव करिया पड़ो. So k plus 1 minus k plus 1 cancel, plus 1 minus 1 cancel. That is we prove a plus AR square plus dot dot a into r to the power k equal to a into r to the power k plus 1 minus 1 by r minus 1. Now take the LHS part. LHS a plus AR square plus dot dot a into r to the power k. अच्छा a into r to the power k रो प्रीवियस टर्म कौन होबो a plus AR square plus dot dot a into r to the power k minus 1 plus a into r to the power k, but a into r to the power k minus 1 रो सम टा कौन होबो a into r to the power k minus 1 by r minus 1 होबो. That is एडी हम सब्स्टिट्यूट करछि देखो. So a into r to the power k minus 1 by r minus 1 यार वैल्यू आम ये सब्स्टिट्यूट कले a plus AR square plus dot a r to the k minus 1 जोटा कि अच्छी ये आमर जो पार्ट आम एज्यूम करछे a into r to the k minus 1 equal to a into r to the k minus 1 by r minus 1 plus AR हम plus AR. तो या को सिंप्लीफाई कले यार एलसीएम ने जो r plus 1 तो a into r to the k minus 1 plus AR into r minus 1 है AR into r minus 1. Now so take it common. अच्छा देखो ये आम यहाँ जी कमन नेबा सो AR into r minus 1 आसियो. सो एटा कमन ले कौन होची ना r to the k minus 1 plus
एटा कॉमन देछि r इंटू r माइनस 1 अछि r टा मल्टीप्लाई करले कोन अछि r स्क्वायर माइनस r नै कि r स्क्वायर माइनस 1 r स्क्वायर माइनस अच्छा अच्छा एटा कोन अछि लास्ट टर्मटा कोन अछि a r टू बार k सॉरी a इंटू r टू बार k a r टू बार k a r टू बार k इंटू r माइनस 1 हम ना कि अच्छा एटा कॉमन ले r टू बार k माइनस 1 प्लस r टू बार k इंटू r ले केते हो r टू बार k प्लस 1 माइनस r बाय r माइनस 1 डू यू अंडरस्टैंड तक प्ले एटा कॉमन ले r टू बार k माइनस 1 r टू बार k को r माइनस 1 मल्टीप्लाई करले कोन हो r टू बार k इंटू r माने r टू बार k प्लस 1 माइनस r अच्छा એટલે r टू द पावर k प्लस 1 माइनस r टू द पावर k जो r टू द k को r माइनस 1 रे मल्टीप्लाई करले कोन आसियो r टू द पावर k प्लस 1 r टू द पावर k प्लस 1 माइनस r टू द पावर k सो प्लस r टू द पावर k माइनस r टू द पावर k कैंसिल हैला नै कि r टू द पावर k माइनस r टू द पावर k कैंसिल हैला सो a इंटू r टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 by r minus 1 and this is RHS part. Okay. So P of k plus 1 is it true? Hence by method of induction it is true for all n belongs to capital N. So in this way you have to prove all this. N into n plus 1 into n plus 5 is divisible by 6 for all n belongs to capital N. Okay. Now we prove it by method of induction. First we take P of n. Proof. Let P of n into n plus 1 into n plus 5 is divisible by 6 for n equal to 1. For n equal to 1, n into n plus 1 into n plus 5 equal to, substitute the value of n 1, 1 into 1 plus 1 into 1 plus 5, 1 into 2 into 6, 12, 1 into 2 into 6, 12, which is divisible by 6, which is divisible by 6. So P of 1 is true. P of 1 is true. Next, P of n is true for n equal to k. एटा एज्यूम करिया पड़ियो नहीं दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n equal to k. अच्छा दैट इज k into k plus 1 into k plus 5 k into k plus 1 into k plus 5 is divisible by 6. So divisible by 6 means this expression is multiple of 6, that implied k into k plus 1 into k plus 5 equal to 6m for some integer m belongs to z plus now we prove the statement is true for n equal to k plus 1. Claim P of k plus 1 is true. P of k plus 1 is true. That is to prove that k plus 1 n जार k plus 1 पकड़ा k plus 1 एटा कोन छै k plus 1 plus 1 k plus 2 हला ये कोन छै k plus 1 plus 1 5 k plus 6 हला k plus 6 is divisible by 6. Now we take this expression. Now k plus 1 into k plus 2 into k plus 6
इक्वल टू देख या प्रूफ करा गले आम जमी डिविजिबल पावर एडजस्टमेंट करूँ ये तो पावर ना ना ए एक्सप्रेशन ना आसी ए एक्सप्रेशन यूज करा पड़ो तो के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 जगह तुम 6m सब्स्टिट्यूट कर के प्लस 5 तो ना कौड़ी तेणु के प्लस 5 ना बोली आम कौन करिए जो के प्लस 6 अच्छे यहाँ ब्रेक करदे तो यहाँ केमी ब्रेक कर के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 5 प्लस 1 कर गोटे के प्लस 5 रख आ गोटे 1 कर अच्छा तो आमको दरकार के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 आने दरकार सो यहीटार कौन करिया मल्टीप्लाई करिया है ए पार्ट आमको कौन करिया पूरा मल्टीप्लाई कर दियो नाउ दिस वन इज के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 5 या सहित यहाँ गोटे टर्म भाव यहाँ गोटे भाव को मल्टीप्लाई कर दो प्लस के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 ओके डू अंडरस्टैंड देखो ए के प्लस 5 गोटे टर्म नहीं आम यहाँ मल्टीप्लाई कले 1 डाउन नहीं मल्टीप्लाई कले अच्छा यहाँ कौन करिया के प्लस 2 सहित मल्टीप्लाई कर दियो कहीं ना वी हैव के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 इक्वल टू 6m अच्छी सो यहाँ सहित मल्टीप्लाई कले कौन हो के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 प्लस 2 इंटू के प्लस 1 2 इंटू देखो यहाँ सहित मल्टीप्लाई कर के प्लस 2 टाक ब्रेक कर के सहित ये दुटा मल्टीप्लाई कली 2 सहित ये दुटा मल्टीप्लाई कली सो 2 इंटू के प्लस 1 2 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 प्लस के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 ओके सो के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 इक्वल टू 6m बाई इक्वेशन 1 लेट इट बी इक्वेशन 1 नहीं जो एटा 1 नहीं जो दिस वन इज 1 नाउ के इंटू देख ये कौन अच्छी आमर जो एक्सप्रेशन आसला ये सब्स्टिट्यूट करवा हियर वी सब्स्टिट्यूट दिस रिजल्ट नाउ के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 6 इक्वल टू ये जो एक्सप्रेशन आसला के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 इक्वल टू 6m प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 प्लस के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 टेक इट कॉमन के प्लस 1 कॉमन ले कौन रहा 2 टा मल्टीप्लाई करो 2 इंटू के प्लस 5 मीन्स 2k प्लस 10 2k प्लस 10 प्लस k प्लस 2 प्लस k प्लस 2 डू यू अंडरस्टैंड 6m इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस k 3k प्लस 12 now 6m into k plus 1 plus 3k plus 12 means 3 into k plus 1 3 into k plus 4 okay 6m plus 3 into k plus 1 into k plus 4 k plus 1 into k plus 4 for whatever may be the value of k is a natural number k must be greater than 1 na k ର ଫେରିଲା କ'ଣ ସବୁବେଳେ 1 ରୁ ଗ୍ରେଟର ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛୁ ଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ଫର୍ k n ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ k ତାର ତ k ଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 1 ରୁ ଅଧିକ ହେବ ଯଦି k ଟା ତମେ 2 ନେବ 2 ନେଲେ କ'ଣ ଅଛି 2 ଏଇଟା 2 ପ୍ଲସ୍ 1 2 ପ୍ଲସ୍ 1 କ'ଣ ଅଛି 3 ଏଇଟା 2 ପ୍ଲସ୍ 4 କେତେ ହେଉଛି 2 ପ୍ଲସ୍ 4 6 ହେଲା ଏଇଟା 2 ପ୍ଲସ୍ 1 3 3 ଇଣ୍ଟୁ 6 କ'ଣ ଅଛି 18 ହେଲା ଆଚ୍ଛା 18 ଟା 2 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ k ପ୍ଲସ୍ 1 plus k plus 4 always it must be divisible by 2 this one is even number k plus 1 into k plus 4 is an even number for whatever may be k must be greater than 1 okay but k plus 1 into k plus 4 must be divisible by 2 divisible by 2 that means k plus 1
इंटू के प्लस 4 देख के तुम जहाँ नौ नेचुराल नंबर हो के प्लस 1 इंटू के प्लस 4टा जेहेतु यहाँ सब 2 द्वारा डिविजिबल हम एक्चुअली आमको प्रूव करा पड़ो के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 6 इज डिविजिबल बाय 6 तार तो मल्टीपल ऑफ 6 दरकार ना जेहेतु ये 6 एम अच्छी यहाँ 6 आसिले नहीं कि 6टा आम कमन नहीं पारिया तो 6टा कमन बाहर करने आम कौन ना के प्लस 1 इंटू के प्लस 4 इज एन ऑलवेज इवन नंबर दैट मीन्स के प्लस 1 इंटू के प्लस 4 is an even number is divisible by 2 means this is that 2m or you can write 2n 2p where p belongs to z plus p belongs to z plus okay now k plus 1 therefore k plus 1 into k plus 2 into k plus 6 equal to 6m plus 3 into 2p 3 into 2p 6m plus 6p 6m plus 6p now 6m plus 6p means 6 into m plus p so m plus p means multiple of 6 which is divisible by 6 which is divisible by 6 okay so p of k plus 1 is true hence by method of induction it is true for all n belongs to capital N okay so in this way you have to prove all the questions of study material and you can prove also problems your textbook element exercise so in next class we do some other problem okay Thank you.